Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So it is my first video and today we are going to explore the exciting world of data analysis. So if you are interested in becoming a data analyst or already working in the field of data or either you want to enhance your skills, so you come to the right place. In this video, we will be discussing regarding the roadmap of becoming a successful data analyst. So let's jump into it. ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा ताकि ईच एस्पिरेंट जो डेटा एनालिस्ट या डेटा डोमेन के फील्ड में आने की सोच रहे हैं उनको बेनिफिट हो. So first, what is actually data analyst and what is the job profile of our data analyst? So अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो डेटा एनालिस्ट का मेन रोल रहता है कि रॉ डेटा को कैसे वो मीनिंगफुल इंसाइट्स में लेके आता है. For example, if I will give you a picture in which there is a symbols and shuffles of all the pictures and you need to tell the story behind all the content around it. So यही जॉब रहता है डेटा एनालिस्ट का. So basically data analysis process involves collecting of data, cleaning of data, transforming and interpreting data from unmeaningful to the meaningful insights. फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन जहाँ पे क्लाइंट और स्टेक होल्डर से डिस्कस करके हम डेटा को पुल आउट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट गेटवेज एंड ऑल. सेकेंड इज डेटा क्लीनिंग. डेटा रॉ फॉर्म में होता है. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज डेटा क्लीनिंग एंड इट्स वेरी क्रूशियल. थर्ड इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. आफ्टर क्लीनिंग द डेटा it necessary to transform into suitable format. So in simple words we can understand कि कोई भी डेटा एनालिस्ट रॉ और बिग डेटा को एनालाइज करके मीनिंगफुल इंसाइट निकालता है ताकि हायर अथॉरिटी फॉर एग्जांपल वीपी एमडी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके अपने बिजनेस के रिगार्डिंग. नाउ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस सेशन इज स्किल्स. कई सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं कि हमने बात तो देख लिया कि डेटा एनालिस्ट बनना है बट उसके लिए कौन कौन सी जेन्युइन स्किल रिक्वायर्ड होती है. सो एज पर माई नॉलेज आई एम वर्किंग knowledge since I am working from last 2 to 3 years in data domain. So I can say that जो मेजर पार्ट है मेजर चंक है ऑफ डेटा एनालिस्ट का वो तीन चीज़ के अराउंड मूव करता है. फर्स्ट एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई और टैब्ल्यू or any kind of data visualization tool. So I know some people will disagree कि Excel क्यों ही सीखना है, but let me tell you कि if I would take my scenario तो मैं अपने डे में लगभग 60% टाइम एक्सेल पे एक्सेल यूज़ करता हूँ. सो बेसिकली एक्सेल से आप छोटे मोटे चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं. You can make tables, you can create pivot tables, indexing, lookups. So Excel में advanced में जाने की ज़रूरत नहीं है. If you have a basic knowledge of Excel, so it will be going to very helpful for you. So the first and foremost skill I would recommend is Excel. Excel में आप sum, average, mean, median and VLOOKUP, indexing, match if, count if, and duplicates using different filters, charts. So have Excel a question arise that ये चीज़ कहाँ से सीखें? So I will mention all the stuff, all the detail from where I personally have learned things in the description box.
सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड मेरे यहाँ बताने का मकसद केवल एक ही है कि आई वॉज आल्सो एक्सपेरेंट of data analyst in my career, so I can relate you people that how it is very tough to getting things. uh, I have also searched YouTube videos for knowledge perspective, but do not get quality content, or the things which I want is not delivered over there. So the purpose of this video is only that कि जो एस्पिरेंट मेरे तरह के हैं, जो जिनको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन डेटा डोमेन, और वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द रियल टाइम सिनेरियो, अगर कोई कॉर्पोरेट का बंदा आपको ये चीज़ बताता है, सो यू कैन ईजिली रिलेट टू दैट कि अगर उसने ऐसा सीखा है तो मैं भी इस टाइप से उसको फॉलो अप करके चल सकता हूँ. आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू फॉलो all the step which I am telling you people, but at least you should try to practice and make your timeline like same as the actual market demanding of. So second skill is SQL. SQL is a structured query language. In simple words, we can say that कि different database, for example Oracle, MySQL, इनसे कम्युनिकेट करना, डेटा को एक्सट्रैक्शन करना, मैनिपुलेट करना, कंसोलिडेट करना, अलग अलग फिल्टर्स यूज करना, इन सभी चीज़ों में सीक्वल काम आती है. थर्ड इज पाइथन और आर. सो मैनी पीपल विल आल्सो स्ट्रगलिंग लाइक कोडिंग कंपलसरी है क्या, हम कोडिंग के बिना टेक्निकल डोमेन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते. So the answer of this question is different, means it is both yes and no. Let me tell you how. So different companies के different projects होते हैं. Some company either use Python or different library like NumPy, Pandas. Some recommends to use R. So it totally depends upon the company to company or the project to project. आपको जिस भी टाइप का प्रोजेक्ट मिलता है, अगर वहाँ पे पाइथन यूज़ हो रही है, देन इट इज़ प्लस पॉइंट फॉर यू टू लर्न पाइथन. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो यू कैन नॉट एंटर इन दैट डोमेन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है. फोर्थ थिंग, पावर बी आई और टैब्ल्यू. सो दीज टू टूल्स आर डेटा विजुअलाइजेशन टूल, और आई विल रिकमेंड टू लर्न फर्स्ट पावर बी आई इंस्टेड ऑफ टैब्ल्यू, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम टैब्ल्यू ही स्टार्ट किया था एंड आई गॉट कंफ्यूज रिगार्डिंग सम फीचर्स जो मैं अभी भी यूज़ नहीं करता हूँ. सो आई विल रिकमेंड टू लर्न एटलीस्ट फर्स्ट पावर बी आई दैन टैब्ल्यू, बिकॉज उसका जो इंटरफेस है, फर्स्ट थिंग इज दैट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इट इज़ आई वुड से एस्पिरेंट्स फेवरेबल, बिकॉज वहाँ पे आप इजीली डेटा को विजुलाइज करके देख सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, and it is easy to handle in spite of Tableau. So when you will become an expert of Power BI, you can switch in Tableau because both are market demanded tool. Coming to the soft skill, so communication, critical thinking, problem solving, attention to details. These are very minute skills, but it impacts a lot. Problem solving. The thing is why we are making dashboards, reports. We get requirement from business, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना is the creating dashboard in the form of dashboards. अगर वो पर्टिकुलर डैशबोर्ड आपकी बिजनेस नीड को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, then there is no meaning of creating such reports or dashboards. Attention to detail. So creating dashboard is an art, and involving all the details, all the required peripheries into the particular dashboard
becomes more important than creating a simple report. सो वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, बिजनेस नीड को उसमें अच्छे से एड्रेस करना चाहिए. नाउ कमिंग टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर डेटा एनालिसिस. So there is n number of online courses. Either you can learn from YouTube, there is Edureka, Udemy, and many more courses that are available over the internet. And I'm also like dropping some of the stuff which is required uh, to learn in the description box. So please check it out. So in this YouTube channel, what I am thinking to give you all the stuff. Like I will be teaching you regarding Power BI, Excel, SQL and all those skill which is required. अब हम बात करते हैं कि skills तो हमने gain कर ली, but job कैसे acquire करें. So if you are a fresher and if you are a experienced in other field but desire to coming in the data analysis, दोनों के लिए scenarios different है. So acquiring job is also different. So let's start with the freshers. The most important thing is building our personal project. So if you will start with the basic learning, try to inculcate all those projects in your resume. For example, अगर आप start करते हैं Excel से या SQL से या Power BI से, उन सभी projects के डिटेल अपने portfolio में please ऐड करें. And because as a fresher you are not a market oriented, आपको एक्सपीरियंस नहीं है. सो अगर आप इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हैं सो केवल प्रोजेक्ट से, दैट व्हाट एक्चुअली यू हैव डन in your portfolio, you will be in the condition to explain all those stuff to their interviewer. Because I have seen people are inculcating many invalid things in the resume. और जब इंटरव्यूअर उससे पूछता है वो चीज़ स्किल्स की, they ask very basic and conceptual question, but people are not even in the condition to explain whatever they have done. So it shows very bad impact of your personality और जिससे आपका इंटरव्यू खराब हो जाता है. इस चीज़ के बारे में हम लेटर ऑन पे डिस्कस करेंगे in our upcoming session. So if you are a fresher, so your salary will range in between 3 to 4.2 LPA, and if you have acquired some of the experience in data domain, your salary can range between 3 to 6 or maybe go up to 7. And if you have 9 to 19 or if you have 5 to 19 year of experience, so you can range between 7 to 25 LPA. And so at last I want to discuss regarding few things. First is that your skills should be speak up more than your words. Look, industries professional are desiring for skills only. अगर आपको Excel आता है, अगर आपको SQL आता है, then only they will hire you. Otherwise, you are wasting your time. So becoming a data analyst is not that much tough. Even I have seen people are learning these skills in the 3 months, 4 months, and you can also do it too. Just you need to follow up a proper roadmap. Whatever stuff or content I am mentioning in my description, please go through it once and do a lot of practice. So the bonus point, the key point over here, make your IT in HackerRank or W3 School. These two platforms I personally have used, but from there you will be solving the real project's problem. That either you can see all those problems in the real projects as well when you will come in the corporate. So it is highly recommendable thing. Next thing is your communication skills must be perfect.
Not good, not average, it should be perfect. Because competition is going to be really tough. There are n number of people who are learning all these tools and finding their passion in the Power BI and data analyst. So if you think you are a appropriate aspirant or candidate, so you have to communicate the things, all things better. In this YouTube channel, I will try to explain or teach each and every key skill like Excel, SQL, R, Power BI, Tableau, Power Automation, and all those technical things which a corporate person is required, being a data analyst or a data scientist or a data engineer. So please subscribe this channel, hit the bell icon